गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। अभी भी हम लोग न्यूयॉर्क में ही हैं और आज का दिन शुरू कर रहे हैं हम लोग विथ हॉगिंग लॉट ऑफ फूड। सो वी आर इन टैमरिन फाइन इंडियन डाइनिंग। हम लोग यहाँ पे बहुत बार आए हैं। यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छा है, हंडी बिरयानी करके मिलता है, हम लोग आके वही खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल वहीं पे खाएंगे, उसके बाद रिवर साइड वॉक। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी क्लाउडी वेदर है बट बारिश का संभावना कम है। वाओ, संभावना परफेक्ट हिंदी। सो लेट्स सी, होपफुली बारिश नहीं हो एंड होपफुली हम लोग अच्छा खासा घूमने को मिले। एंड फिलहाल तो जाके बिरयानी दबाते हैं। रवि कुछ बोल रहे हैं जगह के बारे में? Tamarind fine dining. 2000 years old? No, No? this is just 2 months year old. Okay. 2 month baby. It's a fine dining, very good restaurant. Our madam likes big handis he will eat. That says 2 people. But I will share some and we'll eat another day. It will never end. This guy ate 4 quesadillas and 1 bagel and ready to tamarind in 4 hours. Expert comments. It's very wonderful. Yeah, you have it and give your reaction. No, you no. Oh, okay. I have to taste it and tell you the review. Oh my god. You guys got my review. Thank you. Everybody busy meeting. No talks, no bhashan. Yeah, nobody's talking anything, everybody's eating. तो अभी हम लोग आए हैं ये ब्रिज में, एक रेल ब्रिज करके है हडसन रिवर के ऊपर। तो हम लोग उसमें आए। एक्चुअली ब्रिज का वीडियो लेना भूल गया। हम लोग कुछ ऑफिस का बात कर रहे थे और फोटो लेना भूल गया। एंड दिस इज कॉल्ड वॉकवे ओवर द हडसन। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पार्किंग का इशू नहीं है। और मतलब यहाँ पे आने के बाद आगे पीछे इस तरह बहुत सारा पार्किंग है। सो पार्किंग शुड नॉट बी एन इशू। लेट्स गो इन एंड चेक इट आउट। गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल रहा है यहाँ पे, तो कॉफ़ी वॉफ़ी ले सकते हो। बैठने का भी जगह है। आज बहुत क्लाउडी है, पता नहीं कैसा लगेगा बट लुकिंग प्रीटी गुड। और देयर आर हॉट एंड आइस्ड कॉफ़ी, बोथ आर देयर। तो हम लोग यहाँ से कॉफ़ी और चाय वगैरह ऑर्डर किए। डर्टी चाय करके एक असम टी के ऊपर वो लोग एक चाय बना रहे हैं, उसका नाम रखे डर्टी चाय। फ्यू पीपल आर हैविंग दैट एंड वी आर हैविंग हॉट कॉफ़ी एंड मैं आइस्ड लैटे। सो दैट्स अबाउट इट। पता नहीं यहाँ पे इंडियन चाय कैसे मिल रहा है बट इट्स गुड वट एवर इट इज़। और वहाँ पे एक रेस्टरूम है, वहाँ पे विजिटर सेंटर है, आप लोग जा सकते हो। और वहाँ पे बैठने का बहुत जगह है। तो ओवरऑल अ गुड फैमिली प्लेस टू कम, हैंग आउट करने के लिए भी आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे साइकिल लेके ज़रूर आना। I want to show you guys, we are at the hill station where you can cross the big bridge by walking.
It's such a huge river. We will show you guys in some time. Before that, these guys are putting like Indian 𝗀𝗃𝗃 here. You can get a, you can see, show them the 𝗀𝗃𝗃 tire, man. Show them the 𝗀𝗃𝗃 tire. I showed. Man, this is looks like the menu. If you see, it's called dirty tea. This is not dirty. It's as dirty as you know. You will never get in India, but it's so spicy, very nice, good flavor. We will show you guys how dirty it's outside there. Thank you. No, you need to start. Okay, first I want to show my face. Who am I? This is 𝗀𝗃𝗃𝗃𝗃. Now I'll turn the camera to Mr. Shank, who is here on this mountain. I drink black coffee. People are taking the, you know, hot coffee, this coffee. हमने अपना कॉफ़ी चाय वाय का इंट्रोडक्शन तो दे दिया था. अब क्या है, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो इतने माउंटेन में से हरे भरे मौसम में आकर चाय कॉफ़ी छोड़कर ठंडा वाला कॉफ़ी ले रहे हैं. अपने आप को दिखा रहे हैं मिलियनर बिलियनर. आइए मिलाते हैं जैसे शांकू द फेमस यूट्यूब. Let's meet Shanku with his millionaire coffee, cold coffee with some water and extra Okay, tea. चलते हैं हम लोग ब्रिज की तरफ अब. चलो. ओके, मैं यहाँ पे ठंडा कॉफी लिया हूँ क्योंकि मुझे, आप लोग को पता है, इतने दिन से देख रहे हो मैं कभी हॉट कॉफी पीता नहीं हूँ, सबको पता है. सब कहानियाँ हैं. मैं कभी नहीं पीता. ये सब स्टाइल है यहाँ के कि this आई बिलोंग टू दिस प्लेस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. और अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द ब्रिज. और यहाँ पे दो साइड है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है. तो राइट तरफ ब्रिज है और लेफ्ट तरफ हाइकिंग है. दैट गोज टू द वुड्स, नेचर हाइक जैसा. तो डिपेंड्स आप लोग कहाँ पे जाना चाहते हो. यहाँ पे मुझे एक स्टैचू दिख रहा है. मैडम का फोटो ले लो, ब्रिज बस को दिखा आपको. और ये मैप से आप लोग को थोड़ा आइडिया मिलेगा, बट कुछ ऐसा आइडिया है नहीं. स्ट्रेट एक ही रोड है, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है.